Okay, today my first class uh, paper molecular biology and genetics. First topic is a concept of alleles and multiple alleles. Concepts of alleles and multiple alleles. सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझिए कि ह्यूमन have a 20 pair of chromosomes. 23 pair of chromosomes. 23 like 20, 22 autosomes, 22 pair of autosomes, or one pair of sex chromosome, one pair of sex chromosome. This is a basic information. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हो 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई. This is a female, this is a female, this is a male. Autosomes in a male and females are same, but sex chromosomes are different. In a female, pair of the X chromosome, in a male, one X chromosome and one Y chromosomes. If you consider one pair of the chromosomes like 12th, this is a diploid organisms. Each diploid organisms having two set of chromosome organized as a homologous pair. These are homologous pair of chromosomes in which genes are present at a specific position. इस positions को हम लोग बोलते हो locus. This is known as locus. This is known as locus. Locus is a position on the chromosome where genes are present. Where genes are present. Gene क्या होते हैं? Present होते हैं. Okay. यहाँ तक आपको समझ में आए इस concepts को. अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा एक concept को लिखते हैं. अगर कोई locus है, अगर हम locus की बात करें, अगर कोई डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड को हम 2n बोल सकते हो. दिस डिप्लॉयड ओके. तो ईच लोकस कैरी 2 alleles. मतलब 2 से ज्यादा एलील्स किसी भी लोकस में नहीं रह सकते, क्योंकि डिप्लॉयड मीन्स होता है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. होमोलोगस पेयर ऑफ chromosome. Homologous pair of chromosomes. These are 2 alleles present in the locus. Maximum 2 alleles. These alleles may be same. If the same alleles present, same alleles, term is known as homozygous. If that, like some example is this, for example, capital T, small t, homozygous. If the different alleles term is a combinations. To these are 2 alleles in a combinations. This is known as heterozygous. Capital T, small t. This is heterozygous.
So this is the overall concept of locus in which two maximum alleles are present. Two maximum alleles are present. Now, concepts of genes. Some concepts of genes. Uh, uh, such genes term gene terms is given by Johnson's gene concept is acetone and some uh, a detailed studies is given by Morgan and Bridge and Muller. This is a basic concepts of genes. Gene is a unit of heredity and sequence of the nucleotides. फॉर एग्जाम्पल दिस एक हमने ये क्रोमोसोम्स कंसीडर कर लिया उस क्रोमोसोम में ये जो मान के चलिए इस क्रोमोसोम में एक सेगमेंट है एक डीएनए का जो सेगमेंट्स है और उस सेगमेंट्स का एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनना है एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड मतलब synthesize the polypeptide. So this segment is known as genes. This is a unit of the functional DNA. One unit of the functional part of the DNA known as genes. This is also heredity. This segment also transfer from one generation to another generations. This is a basic concept of genes. Some other points related with the genes, such as the cistrons. Cistrons are those part of the DNA which synthesize the one polypeptides. Means you can say one cistron, one cistron, one cistron, one polypeptide, one polypeptide. But this concept is maybe changes, maybe change in the prokaryote. In a prokaryote, in a genes, many cistrons. In many cistron, many cistron. Like known, this is example of lycoperons. But here this one cistron is one polypeptides. This is all unit of the genetic material which is equivalent to the genes. मतलब genes को define करने के लिए एक हमने दूसरे मेथड से या दूसरे कंसेप्ट से मैंने इसको माना कि एक यूनिट है जो एक वन पॉलीपेप्टाइड्स को सिंथेसाइज करता है. Another modern concept of the genes is a muton. Muton is a unit of the mutation. Muton is a unit of the mutation. Muton may be small as a nucleotide pair. Gene mutation caused by the replacement of the one purine, pyrimidine or addition. मतलब means mutation maybe substitution or insertion or deletion. Insertion or deletion. Next one is a recon. Recon is a unit of the recombination rearrangement due to the crossing over. This is another unit of the genetic material. So this is the overall concepts of the genes. Next one is a what is the concept of the alleles? Concept of the alleles. The concept of alleles.
concept of allele. Concept of alleles. Alleles, yeah. What is the allele? This alleles. अगर मान के चलते, मान के जैसे जैसे आप एक जीन ले लिया आपने, कोई एक जीन है जो वाइल्ड टाइप है, इसको हमने वाइल्ड टाइप मान लिया, वाइल्ड टाइप, या इसको हमने नॉर्मल मान लिया, नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल भी ले लिया। जीन लीजिए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो दे जीन्स को हमने एक सिंबल भी ले लिया कैपिटल ए, लेकिन म्यूटेशन, सम पॉइंट म्यूटेशन, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक म्यूटेशन हो गया, दिस इज ए चेंज इनटू स्मॉल ए, लाइक दिस इज इस एरिया पे मान के चलते हैं थायमिन प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है। अब ये हो गया म्यूटेंट एलील, म्यूटेंट एलील, जो नॉर्मल से एक डिफरेंट सीक्वेंस में है। तो these are alternative form of gene या version of the gene. These are alternative form. One is a dominant allele, one is a recessive alleles known as allele. So allele is defined as a alternative form of gene, alternative form of genes known as allele. Allele evolve in nature due to point mutation. Allele evolved in nature due to point mutation. Point mutation. Gene can be categorized on the basis of number of allele, that is a monoallelic, diallelic, next one is a multiple allele. Multiple alleles. Mono alleles, if consider as a number of allele, that is a one number of alleles. On the basis of number of alleles, gene is categorized. When n is a number of alleles, so n, this is a 1, diallelic में number of alleles is a 2, और multiple alleles में number of allele is greater than 2. So multiple alleles are those genes which have more than 2 allele in a population. क्योंकि लोकस में तो 2 से ज्यादा एलील एग्जिस्ट नहीं कर सकते, केवल पॉपुलेशन में ही आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इन ए पॉपुलेशन more than 2 alleles are present in the nature, in the population. This concept is known as multiple allele. तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग मल्टीपल एलील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, जो कोई भी क्रोमोसोम में डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए होमोलोगस। ओके, हर एक पोजीशन होगी, ये क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग लोकस बोलते हो,
where genes are present. In the chromosome where genes are present known as locus. किसी भी लोकस में दो एलील्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम टू एलील्स फॉर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, फॉर ए डिप्लॉयड। क्योंकि डिप्लॉयड का मतलब ये हो गया कि ईच क्रोमोसोम हैज ए homologous chromosomes, so that means homologous pair of the chromosome presents. Two alleles maximum present होंगे if the combination of the alleles. So this is a type of genotypes. This is a genotypes maybe the homozygous, maybe the heterozygous. If the combination of the same allele known as homozygous, if the combination of the different allele known as the heterozygous, known as heterozygous. This is a some history of the genes. Already I have already discussed concept of genes, that is a functional part of the genes which synthesize the polypeptides. This is a unit of the heredity. This is a unit of the heredity sequence of the nucleotide that encode the synthesis of the gene product. Okay, this is another modern concept of the gene: cistron, muton, recon. Cistron is a unit of the unit of the genes that synthesize the one polypeptides. So genes is a unit of the DNA, but while cistron is a unit of the genes. क्योंकि जीन्स मान के चलते, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कोई भी जीन्स का इंटायर पार्ट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज नहीं करता, मतलब जीन का हर एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज में उसका क्या कह सकते हो कि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो नॉन कोडिंग भी हैं, नॉन कोडिंग जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो इंट्रॉन्स, रेगुलेटरी। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा ये सब। रेगुलेटरी यूनिट, जैसे रेगुलेटरी यूनिट में अगर आ जाए तो हम लोग प्रमोटर, ऑपरेटर, ये जो पार्ट्स हैं जीन के, वो आपको उनका जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो पॉलीपेप्टाइड में नहीं जाती है। तो जो जीन्स की जो यूनिट है, जो जीन की यूनिट है, उस जो फंक्शनल यूनिट है जीन की यूनिट, जो एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करती है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हो। तो सिस्ट्रॉन को हम लोग कोडिंग पार्ट भी कह सकते हो। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा इसको आप समझ के रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के मान के चलते हैं, ये जैसे कोई पूरा डीएनए है, डीएनए में इतना पार्ट जीन है, जीन में ये पार्ट है जो एक सिस्ट्रॉन है, ऐसे आप समझ लीजिए। बाकी क्या हो सकता है सिस्ट्रॉन, क्योंकि सिस्ट्रॉन के पास अपना खुद का रेगुलेटरी सब यूनिट होगी जो इस जीन्स का एक ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए नेसेसरी ये एक यूनिट होती है, वो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है म्यूटान। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ म्यूटान के बारे में कि यूनिट ऑफ म्यूटेशन, चेंज इन द डीएनए, वन न्यूक्लियोटाइड चेंज एज द सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन। रिकॉन इज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कंसेप्ट ऑफ एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स नोन एज एलील्स, allele evolve in nature due to the point mutation. Genes are monoallelic, diallelic, maybe multiple allele को हम लोग अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। लेकिन अभी आप इतना समझ के रखिए कि मल्टीपल एलील, if the genes have a more than 2 alternative form of जीन, अगर किसी भी जीन के पास 2 से ज्यादा एलील्स हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल एलील बोलोगे। ये कंडीशन हम लोग पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिटेल करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। ठीक है, हम लोग आप लोग ध्यान रखिए, अपने आप को केयर करिए, थोड़ा क्रिटिकल पीरियड है। जय हिंद, जय भारत।